This conference will Emotion, now be recorded. emotion No, for no, no. Fault holding. nice crazy Fault. traffic, Okay. NAS traffic. Correct. So, for example, this is our ESXI host that we established, right? ESXI host, and in ESXI host, we added two NIC card like this. One NIC card we wanted to use to manage our RDP kind of thing, या data जो file transfer होगा उसके लिए हम establish करना चाहते हैं. And number of machines are available. यहाँ पे हमारे पास multiple computers are available. These all are the physical machine और इनके थ्रू हम अपने virtual machine जो ESXi host में virtual machine तैयार करेंगे उनको connectivity provide करेंगे. Think about another NIC card. This one is our NIC1 and we have another NIC with NIC2. NIC card should be connected with our storage. एक switch से attach है and switch directly connected with our SAN storage. जो हमने SAN storage तैयार किया है उस SAN storage से हमने इसको जोड़ रखा है. Using protocol, using a storage protocol like as ESXi या फिर NFS जो भी प्रोटोकॉल है अपने पास उनकी हेल्प से we are able to distribute, we are able to share the LAN. Benefit of VM kernel, benefit of VM kernel and IC, it will divide the traffic between virtual machine data to storage. हम स्टोरेज के ऊपर कोई बर्डन नहीं देना चाहते, ना ही हम कोई बर्डन अपने वर्चुअल मशीन नेटवर्क एनवायरनमेंट पे देना चाहते हैं. That's why we need to proceed and configure VM kernel NIC. इसकी एक सेपरेट आईपी एड्रेस डिजाइन करेंगे और उस आईपी एड्रेस को हम अपने स्टोरेज टीम को असाइन कर देंगे, स्टोरेज टीम को गाइड कर देंगे कि दिस इज अवर आईपी एड्रेस फॉर अवर स्टोरेज सर्विसेज. Is that fine? Yeah. Cool. So the procedure to add our VM kernel, we have a both option to configure the IP address. We can proceed with DSCP. यहाँ पे हम क्या करेंगे, DSCP के थ्रू भी IP दे सकते हैं and we are able to assign the IP address through the static. आप यहाँ पे static IP address भी assign कर सकते हैं अपने VM kernel link card में. Now question, troubleshooting भी यहाँ पे देखें. If you are unable to access your LAN, if you are unable to access your shared storage, you are facing some issues like as connectivity issues दे रहा है या और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, we just need to reset or refresh our VM kernel adapter. हम अपने VM kernel adapter को refresh कर देंगे या फिर deattach करके फिर से attach करके देख लेंगे. Open network, go to the VM kernel. यहाँ पे एक switch आपको available हो जाएगी जब भी आप attach करेंगे ना, it will assign you one switch और उस switch को आप क्या करेंगे, एक्शन में जाकर के उस पूरे इन्वायरमेंट को एक बार रिफ्रेश कर देंगे वेरीफाई करके. ठीक है. Now another points related to the DSCP, related to networking. फिजिकल निक कार्ड हो गया, ये अपने पास स्विचेस हो गया. वी आर एबल टू ऐड मोर देन वन स्विचेस. एक स्विच है, इफ यू वांट टू अटैच वन मोर स्विच यू कैन डू दैट, जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड ऐड. वीएम कर्नल हो गया. एक मिनट आज भी स्क्रीन है ना ब्लर हो रही है. आई थिंक यू शुड रीस्टार्ट योर सिस्टम. काफी कुछ है. स्पीड तो बेटर आ रही है हमारी तरफ, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. स्पीड इज गुड. कल रिस्टार्ट के बाद अच्छा हो गया था. सॉरी, कल रिस्टार्ट किया उसके बाद काफी अच्छा था. आज कल की जैसी ही हालत है, रिस्टार्ट के पहले जैसी थी ना वैसी ही हालत है. जस्ट अलाउ मी 2 मिनट, फिर मैं इसको बंद करके ना फिर से रीस्टार्ट करके वर्क करता हूँ क्योंकि स्पीड का तो पिंग कुछ ठीक है. मैं रीस्टार्ट करके फिर कनेक्ट होता हूँ. ठीक है. ओके. use explicit
Okay, Pankaj, can you hear me? Hello. Hello. Yeah. Okay, let me share my screen. Okay, are you able to see my screen? Yep. Now, is it fine? अभी थोड़ा सा ठीक है, means you are getting my screen properly. Yeah. Fine. So we are trying to understand about the concept of standard switch. ठीक है? Mm. Standard switch में, give me a minute, let me connect. Under the networking, we have multiple options like as a port group that work just like a VLAN जो रियल इन्वायरमेंट में VLAN होता है VLAN फिजिकल Mm. मशीन में जो VLAN का सेटअप होता है VLAN की तरह ये टास्क परफॉर्म करता है वर्चुअल स्विचेस वी आर ऑथराइज्ड टू कनेक्ट मोर देन वन वर्चुअल स्विच एक सिस्टम में हम एक से ज्यादा वर्चुअल स्विच को इस्टेब्लिश कर सकते हैं इज दैट करेक्ट एज पर द Yeah. रिक्वायरमेंट अगर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है कि he wanted to add our network using two different switches so we can do that. Okay. Let's say we have one web server which is on DMZs, so we can add one switch, one standard switch as a DMZ, right? Especially it is used for the DMG, our dedicated Mm. network. Yes, Yes. Okay. each and every organization set up our means kind of high security जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे हम इसको assign करते हैं. ठीक है. And physical switch, physical NIC card, we have already added two different NIC card in our ESXI host. ठीक है, तो ESXI में हम दो NIC card जोड़ने के बहुत सारे benefits हो सकते हैं या बहुत सारे reason हो सकते हैं. The reasons are you can say that it will help us to manage the NIC teaming या fault tolerance के लिए हम इसको configure कर सकते हैं and it will Yeah. also help us in case of to configure the what we can say it will also help us to configure our means kind of VM kernel activity. Is that okay? Yeah. Okay. ठीक है. Next, TCP/IP stack. So, do you have any idea about the TCP/IP stack? The actual meaning of TCP/IP?
Why we need to use the TCP/IP stack? Mm. To transfer the data. Transfer the data. Anything else that we can add? Okay, in case of TCP/IP stack, we are able to find multiple options. These all are the built-in service of network. Like we need to start from vMotion. Okay, as per the name suggests, the usage of vMotion is basically can help us in case of migration. If you want to perform the task of migration, then vMotion can help you. इज दैट ओके? जब आप वी मोशन या एस वी मोशन का टास्क परफॉर्म करते हैं ना, सो इट्स मैंडेटरी कि आपका जो वी मोशन का सेटअप है, जो निकाट के अंदर ऑप्शन है वी मोशन का, वो आपका टर्न ऑन होना चाहिए. हाउ वी कैन टर्न ऑन इट? वीएम कर्नल की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, वीएम निक 0 जो मैनेजमेंट नेटवर्क है, ओपन करेंगे, गो टू द एक्शन, click edit setting, and it will give us option to configure vmotion, Mm. provisioning, fault tolerance, NFC, and application. If you want to perform the task related to these options, so definitely what we need to do, हमें वो सर्विस को टर्न ऑन करना पड़ेगा जो भी हम क्लस्टर में अटैच करना चाहते हैं. मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट रहता है, बाकी की सर्विसेज आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करनी होती है. Like if you want to perform a vMotion migration, manual migration करना चाहते हैं, then you can proceed with vMotion. Provisioning that help us to manage our storage, share storage. Fault tolerance you can say that एच ए का अपग्रेडेड वर्जन फॉल्ट टॉलरेंस होता है, क्योंकि एच ए में क्या होता है, रीस्टार्ट हो जाती है हमारी वर्चुअल मशीन जब भी हमारा एक ESXi डाउन हुआ एंड इट विल मूव टू द नेक्स्ट ESXi, देन आवर वर्चुअल मशीन विल बी रीस्टार्ट, राइट? अगर आपको डाउन टाइम बचाना है तो फॉल्ट टॉलरेंस एक्टिवेट करना पड़ेगा, देन फॉल्ट टॉलरेंस कैन हेल्प अस, राइट? Yeah. फाइन. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया एनएफसी रेप्लिकेशन. जब आप अपने ESXi होस्ट का रेप्लिकेशन, VM का रेप्लिकेशन या फिर vCenter सर्वर का रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करना है, दैट टाइम वी जस्ट नीड टू एक्टिवेट. TCP/IP स्टैक के अंदर ये सारी सर्विसेज मिल जाती हैं. वी क्लिक ऑन द TCP/IP स्टैक एंड सेलेक्ट vMotion, गो टू द सेटिंग्स. यहाँ पे हम अगर सेटिंग्स में जाते हैं, वी आर अनेबल टू फाइंड इट क्योंकि IPv6 पे ये कॉन्फ़िगर नहीं है अभी. We don't have option to configure the IP. We haven't used the IPv6. That's why we are IPv6. unable to make any changes. So it's work with IPv6 only. IPv6 only. यहाँ का जो ये दोनों ऑप्शन आपका IPv6 पे काम करते हैं अगर आपने नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर IPv6 को कॉन्फ़िगर किया है. Okay. Only the default TCP/IP stack you are able to make a changes, because the default TCP/IP stack contain the information about both. IPv4 की भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और IPv6 की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी. प्लस it can also help us to edit the ESXi host name. अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, अपने TCP/IP स्टैक की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं डिफॉल्ट पे, और यहाँ से आप इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं. मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपको होस्ट नेम डिसाइड करना है ESXi -1, ठीक है, लाइक दैट हमने इसका नाम दे दिया ESXi -1. अगर आपको मैनुअल सेटअप करना है, यहाँ पे मैनुअल DNS की आईपी देनी है, सेकेंडरी DNS की आईपी देनी है, प्राइमरी DNS, सेकेंडरी DNS, या गेटवे असाइन करना है, तो वी कैन डू दैट. रिक्वायरमेंट कब होती है? इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है? इट रिक्वायर्ड व्हेन एवर वी सेट अप आवर डोमेन कंट्रोलर. जब भी हम डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश करते हैं, तो उस केस में जब भी हम अपने ESXi होस्ट को डोमेन का मेंबर बनाते हैं, Remember देन यू brother. आर एबल टू डू दैट. ठीक है? So from host option, we can do that too, right?
पोस्ट बट यू मैसेज मस्ट आईडी। बी टू कॉन्फ़िगर दिस यूआई से मैंडेटरी है, यहाँ से केवल आप एडिटिंग कर सकते हैं। ओके यहाँ से जो चेंजेस है करेंगे ना, उसके बिहाफ पे हम अपने ESXi को डोमेन का मेंबर नहीं बना सकते। बट अगर आपने DSCP अपने DCUI पैनल से इनको कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर पैनल वी आर एबल टू मेक अ चेंजेस, एडिट कर सकते हैं, उसमें मॉनिटर कर सकते हैं, और नेम वगैरह यहाँ से बदला जा सकता है। बट जो प्रिफर्ड है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो हमें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी अपने बैकएंड से, बैकएंड इन द सेंस DCUI पैनल। DCUI से। ओके देन वी आर एबल टू मेक एनी चेंजेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आइकॉन। तो अभी हमने कुछ इसमें डिस्कस किया नहीं, बिकॉज डोमेन के पार्ट में इसको हम ऐड करने का काम करेंगे। ठीक है। ओके मोस्ट कॉमन जो यूसेज है वो हमें पोर्ट ग्रुप के बारे में देखना है, स्विचेस के बारे में हम्म, देखना है, और उसके अंदर जो ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं उनके बारे में ज्यादा बेटर तरीके से देखना ओके है। नाउ बैक टू द नेटवर्क फायरवॉल रूल। यहाँ पे फायरवॉल रूल्स मीन जो लॉजिकल, दिस इज द फायरवॉल रूल फॉर लॉजिकल सेटिंग। n number of services are available that you can use to enable and disable, या अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, IPv6 की सर्विसेज है, एक्शन पे जाएंगे। इफ यू आर टू डिसेबल इट मीन्स बार बार डिस्टर्ब हो रहे हो DHCP IPv6 की वजह से, इट विल conflict and it will give us a PIPA IP address every time, so you just need to disable it। ये लॉजिकल डिसेबल होगा, लॉजिकल सेटिंग्स है, मीन्स जो सर्विसेज आप टर्न ऑन नहीं करना चाहते हैं, जो पोर्ट आपको ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, यू कैन डू दैट। वी हैव n नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है। SSH भी है, NFS क्लाइंट भी है, NFC भी है, SNMP, ISCSI। अगर आप यहाँ से सर्विस ब्लॉक कर रखे हैं, यू आर अनेबल टू परफॉर्म द टास्क। Clear? The meaning of firewall rules, it's related to the logical setting. If you want to make any changes with our services, disable करना या enable करना, we can do that from this particular icon। ठीक है। ओके या Any question? firewall rules just on my service. No, it says firewall rule. It should be like services. No, it's all related to services, right? It's all related to the service that help us to manage inbound and outbound। Okay, so if we disable it, it's block. I hope you have idea about inbound and outbound, कौन सा Yeah, yeah, कब काम yeah. है ना। That's yeah. If you want to distribute the resources from your machine to outside, out inbound लगाएंगे, नाम Hmm. से बिल्कुल अपोजिट रहेगा। If you want to access the service from outside to your computer, outbound configure करेंगे। Okay. Clear? Yeah. This is the concept of our networking with the standard switch। Any question? No. आप एक बार प्रैक्टिस करना वीकेंड में, और लगता है Yeah. कि कहीं कोई डिस्कस करना है तो फिर हम लोग इस पे एक बार फिर से डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। Okay. So I have added two physical nick on ESXi, but I cannot able to make VM kernel nick. Okay, are you able to connect it? Yeah, I can able to connect it. I can see the two nick are in the physical nick, Okay. but cannot able to add VM kernel. It's What error you are getting? it's giving let's management VM network VM network. Disabling vMotion create. Fail to create new VM kernel nick. That's it. Nothing. It's said. Can you please create a one port group and try to add? Okay. Let me try to.
already created two port group. Let me try to edit action, edit. Failware order. Yes, okay. Okay, I did add it. In port group, I added. Okay. Okay, so VMs 1, IT, active port management network 1, VLAN ID 20, virtual switch, VMs 1. Group. I can see in the port group, I can see the both NIC card over there, but I cannot do the VM kernel, cannot create the VM kernel port. I can see in the port group. Fix that. Can you please open the switch properties and check the topology, how it's look like? Okay. सेकेंड जो VM कर्नल होगा ना, उसमें आपको अपीपा हाँ. मिल रहा होगा. अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपको अपीपा IP एड्रेस मिल रहा होगा. No, it won't add VM network, VM network. No. Sorry. नहीं मिल रहा. Okay, I can see let me only. explain you. Let me explain you how we can use it. ठीक है? Okay. यहाँ पे हमने सब कुछ सेटअप कर दिया अभी. We added a two NIC card back Unique to the card. DCUI panel. यहाँ पे हाँ. आ गए हम. ठीक है? Yeah. I'm just going to log in my DCUI page. 1, 2, 3. Okay. Let's log on that. I'm going to open the properties of our Ethernet. To open through the Windows machine, just allow me 1 minute. Okay, right now we are on page of our Ethernet DCUI panel. So in DCUI panel, you just need to open
कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क, यहाँ पे जाएंगे and we are able to find two different NIC card available. ठीक है, we have a two Yeah. different NIC card, IPv4, and we have already configured 1.15. This is 15. the Yeah. old one. Yeah. Mm. Back, हमें यहाँ पे अपने एडेप्टर पे जाना है एंड सेलेक्ट सेकेंड एडेप्टर, क्योंकि पहले हमने दोनों कनेक्टेड है. सेकेंड एडेप्टर पे जाओ, IPv कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ and we need to change the IP address of IPv4. सेकेंड निक कार्ड का हमें IP एड्रेस चेंज करना है. Network adapter. Mm. इसको हमने स्टैटिक दे दिया 15 and save the configuration. Y. Open Ethernet card again. This time you need to proceed with the second NIC card. Okay, just 15 and यहाँ पे हमने इसको स्वैप कर दिया है. VM kernel adapter getting 192.168.1.15 और ये अपने पास अभी भी अपीपा IP एड्रेस आ रहा है. So do one thing, configure the manual IP address. सेकेंड निक कार्ड पे आके आप यहाँ पे स्टैटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दो. ठीक है, आई एम गोइंग टू टाइप हियर 192.168.1.16 and provide the subnet mask that you are using 255.255.0. Save it. What you want to do, अगर आपको इसमें से कोई टास्क परफॉर्म करना है, like management, provisioning, replication, SFC, NFC, you can just save it. once you configure it, आपके पास दो अलग अलग IP एड्रेस आपको असाइन हो जाएगी. एक IP एड्रेस आपका RDP के लिए हो जाएगा, वर्चुअल मशीन्स की RDP के लिए. दूसरा IP एड्रेस you can use for the second NIC, you can use for the making a communication between storage like this. अब देखिए यहाँ पे दो निक कार्ड है, दो अलग अलग IP एड्रेस हमने असाइन कर रखा है. यहाँ पे एक को 15 दे रखा है, दूसरी को हमने क्या दे रखा है, 16. Right. One NIC card that you can use for the RDP VM kernel के लिए, virtual machines के लिए हो जाएगा. और दूसरा जो NIC card है that we can use for the storage services, जो हमारे storage provider हैं उनके लिए हम इसको असाइन कर देंगे. Is that fine? Yeah.
ठीक है, अभी क्या है, वी आर यूजिंग द वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी Hmm. सेटिंग्स हम नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं. इफ यू आर यूजिंग फिजिकल अडेप्टर और बेयर मेटल पे इंस्टॉल हुआ होता, तो वी आर एबल टू फाइंड द ऑल ऑप्शंस. Okay. Now, any question? No. ठीक है, so just go through, take 2 minute time and go through the topics in case of standard switch. तो standard switch तो clear ही कर लेते हैं because we also need to know about the usage of DB switch. But DB switch के लिए we just need to wait क्योंकि हमें उसके लिए पहले Domain. इंस्टॉल करना पड़ेगा vCenter, then we'll get an option. Is that okay? Yeah. Let's mix. Okay. Okay. Just switching it. Half an hour. Okay, Manjit, we can go ahead. Fine. तो ये नेटवर्क हो गया एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द सॉरी ESXi मैनेजमेंट. कैन वी मूव टू डोमेन मैनेजमेंट, डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा vCenter सर्वर इंस्टॉलेशन आ जाएगा. Okay. Yeah. हाउ मच यू कंफर्टेबल विद वर्चुअल मशीन? चलो बाद में अगर आपको लगता है कि VM में हमें टास्क देखना है ना, वर्चुअल Hmm. मशीन का स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करना, उसके अंदर स्टोरेज वगैरह जोड़ना, तो वो हम देख लेंगे, बट अभी हम डोमेन पे चलते हैं. Okay. In case of domain, I have already installed Windows Server 2016 और AD हमने इस पे already install कर रखा है. I don't know what happened. I'm unable to access my RDP. Yeah, this one is my domain controller that I installed. और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि डोमेन नेम क्या है एंड द IP एड्रेसेस हमने जो इसमें कॉन्फ़िगर कर रखी है, every information we just need to know. DSA.msc, it will redirect you on page of Active Directory users and computers. हमने जो डोमेन बनाया है विद नेम ऑफ class.com के नाम से, ठीक है. अंडर द Okay. class.com created GCP, एक यूजर हो गया, और let me create one more user with name of AWS, another user. Already available, I think किसी ना किसी, okay, यहाँ पे होगा I think. ओके ओके, लॉस्ट एंड फाउंड में हमने मूव कर रखा था एक प्रैक्टिकल के लिए, तो वहां से हटा लेते हैं इसको. गो टू द व्यू, लॉस्ट एंड फाउंड OU के लिए आपको व्यू में जाना है Advanced एंड features. क्लिक एडवांस फीचर. लॉस्ट एंड फाउंड OU आ गया. ये आप देखिए, 2 यूजर ऑलरेडी बना रखे थे. आई वांटेड टू Hmm. मूव इनटू द यूजर्स, ठीक है. अब हमें यहाँ पे दिख जाएंगे यूजर्स की प्रॉपर्टीज में आएंगे, या AWS, Azure और GCP तीनों यूजर्स दिखाई पड़ रहे हैं. इज दैट क्लियर? Yeah. Our agenda to understand about why we need to associate our domain controller to ESXi host and to our vCenter server. vCenter. Any technical reason? Centrally management to manage multiple ESXi hosts Hmm. and centrally authentication from AD to each ESXi host. हाँ, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर से हम मल्टीपल ESXi होस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, vCenter को कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग परमिशंस असाइन कर सकते हैं, एंड नेम रिजोल्यूशन के लिए भी होता है, और Yeah. NTP सर्विसेज के लिए भी होता है. PDC एमुलेटर जो है NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वी कैन यूज इट फॉर द NTP सर्विसेज एज वेल, करेक्ट.
Yeah. Fine. So 199, this is the IP address of our domain controller. And make sure both machines must be communicate to each other. यहाँ पे हम ping करा के देख लेते हैं. Ping is space 192.168.199. ठीक है. And yes, we are able to get a communication between each other. Back to the ESXI और ESXI में again we already log in. तो आपको यहाँ पे जाना है IPv4 में. IPv एड्रेस मैनुअल कॉन्फ़िगर कर देंगे स्टैटिक. अब आ जाइए DNS कॉन्फ़िगरेशन में. ओपन इट. अंडर द DNS आपको प्राइमरी DNS IP एड्रेस प्रोवाइड करना है 192.168.11. ठीक है. 192.168.1.199. इज दैट ओके? डोमेन का राइट. अल्टरनेट अपने पास कोई नहीं है तो 8.8.8 रख दो क्योंकि अपने पास एक ही डोमेन कंट्रोलर है और ये है आपका होस्ट नेम तो आप डिस्प्ले नेम देना चाहते हैं. ठीक है. तो आई वांटेड टू प्रोसीड विद ESXI. ओके. कस्टम DNS सफिक्स पे जाओ. यहाँ पे आपको ESXI नाम देना है एंड एंटर प्रेस कर देना है. IPv4 को स्टैटिक किया, पहला स्टेप. DNS को कॉन्फ़िगर किया, स्टैटिक किया, प्राइमरी DNS एंड अल्टरनेट DNS ओके कर दिया. कस्टम DNS में ESXI का नाम दे दिया. इसको पूरी सेटिंग को सेव करने के लिए इसके बटन प्रेस करोगे, Y प्रेस करोगे एंड सेव द कॉन्फ़िगरेशन. दैट्स इट. यहाँ तक का बस यहाँ पे इतना ही सेटिंग था. बैक टू द GUI. और अब GUI में इफ एवरीथिंग इज ओके ओपन मैनेज. होस्ट में ही मैनेज का ऑप्शन आएगा. सिक्योरिटी यूजर्स एंड सिक्योरिटी में जाएंगे. ऑथेंटिकेशन में आएंगे. अंडर द ऑथेंटिकेशन वी हैव ऑप्शन टू क्लिक ऑन join domain. Just need to click here domain name class.com. This one is our domain name. Username जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड जो भी आपने डोमेन का कॉन्फ़िगर किया होगा. Provide the credential information and click join domain. It is in progress. Wait for a few more seconds. Now we successfully connected with class.com. यहाँ पे हमने अपने ESXI को मेंबर बना दिया है class.com का. Is that clear? Yeah. Okay. So we are responsible to resolve the name as well. तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि इसका नेम क्या आ रहा है. ESXI.class.com FQDN की बात करें. Fully qualified domain name हमारा आ रहा है. ESXI is our host name and class.com is our domain. Yeah. Need to configure our यहाँ पे हमें DNS कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट होगी. ओपन सर्वर मैनेजर रिजल्ट एंड गो टू द DNS. Click tools, open DNS and configure forward lookup zone and reverse lookup zone. So ESXI 1.11, this is my another ESXI 8.0 install कर रखा है. Okay. Add ESXI and the pass IP address is 192.15. Okay. Add it 1.15. reverse lookup zone में रिफ्रेश करेंगे पेज. PTR होने की वजह से यहाँ पे भी दिखने लगा. क्लियर? नेम रेजोल्यूशन हमने कंप्लीट किया. बैक टू द ESXI होस्ट. और अनदर बेनिफिट्स टू कॉन्फ़िगर डोमेन कंट्रोलर. आपको यहाँ पे NTP सर्विस को कॉन्फ़िगर करना होगा. Okay. टू कॉन्फ़िगर द NTP सर्विस, मैनेज सिस्टम
टाइम एंड डेट, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिट एनटीपी सेटिंग, यूज नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, start and stop with port usage, start and stop with host, start and start manually. So we can proceed with host, because if you restart your host, then definitely the NTP service will also restart. Type the server name और IP address. तो अपने पास जो सर्वर है NTP का, which is 199, and save it. We successfully configured the NTP server 199, and we just need to check, we need to restart it क्योंकि अभी भी ये stop दिखा रहा है, तो we just need to restart it. Enable, select your NIC card, जो भी अपने पास अभी हमने ऐड कर रखा है, 16 नहीं है 15 है, तो हमने 15 को असाइन कर दिया, 16 स्टोरेज के लिए है एंड 15 हमारा मेन ESXi का एड्रेस है जिसके थ्रू हमने GUI एक्सेस किया है. सेव इट, go to the action, ओके, क्लिक सर्विसेज. यहाँ पे आपको दो सर्विसेज स्टार्ट करनी है, NTPD राइट क्लिक करेंगे या स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, एंड PTPD, ये दोनों सर्विसेज हम टर्न ऑन कर देंगे. PTPD NTPD. बैक टू द डोमेन कंट्रोलर, नेटवर्क टाइम पे आए, यहाँ पे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे. नाइट्स रनिंग, क्लियर. ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया कि वी कैन यूज इट फॉर द टाइमिंग, to synchronize the timing between domain controller to our ESXi. Plus, you also need to assign for virtual machine. VM में जाके, action में जाके, edit setting पे click करेंगे, and it will give us option of VM options. VM option के अंदर VMware tools, under the VMware tool इसको आपको check mark कर देना है. Synchronize guest time with, Synchronize this time with host. now we successfully configured. This is the part of NTP service with domain controller. Is that okay? Yeah. Another usage of our domain controller, हमने नेम रेजोल्यूशन भी करके देख लिया, नेम रिजॉल्व करके उसमें ऐड करके नेम ऐड करके DNS वगैरह कॉन्फ़िगर करके देख लिया. नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट ऑप्शन, यूजर्स को कैसे मैनेज करते हैं, राइट? Yes. Creating जो ADK यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं, आई थिंक वी क्रिएटेड 3 or 4 डिफरेंट यूजर. DSA.MSC, AWS है, Azure है, GCP है. हमें इनको असाइन करना है अपने ESXi एक्सेस के लिए, and let's see what happened with that. So back to the virtual machines, not virtual machines property, just need host. to click host, Manage. action, permissions. Under the permission we are able to find 3 different users, और ये Okay. जो users में दिखाई पड़ रहे हैं, these all are the built-in user. ये सभी हमारे built-in user हैं. DCUI हो गया, root हो गया, VPX user हो गया, ये सभी आपके built-in user कहलाते हैं. ये I'm going VPX to user. add, What is sorry? the VPX user? What it's for? VPX user can help us. It is logical user responsible to add our ESXi to vCenter server. इसके बिना नहीं possible है. Okay. Wherever we add our ESXi to vCenter server, backend में यही काम करता है. ठीक है? Okay. Next, I'm just going to add one more user. Go to the action, permissions, add users.
and you need to provide the username. Like I wanted to assign aws class.com के नाम से बनाया था, yes, class.com. What you want to do, क्या परमिशन हमें देनी है इसको, रीड ओनली करके देखते हैं थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए. Assign read only permission, click add, close it. I'm going to open to another page, 192.168.1.15, और इस बार हम यहाँ पे लॉगिन करने वाले हैं अपने AWS यूजर अकाउंट अभी हमने ऐड किया जस्ट. FKDN लिखना, AWS heads. कोई नहीं, आई नीड टू रीसेट द पासवर्ड, मैं भूल चुका हूँ इसका पासवर्ड. Here. ठीक है. We are able to access our ESXI with the help of with the help of ESXI domain user. We added our ESXI to member of domain controller, and now you can access your ESXI host using Active Directory users. हमने इसको read only की permission दे रखी है, right? Yeah. In case of read only, we are unable to make any changes. Port group add करके देखते हैं. No, fail to create a port group क्योंकि हमारे पास rights नहीं है, correct? Yeah. You're able to see the entire settings. यहाँ पे check कर सकते हैं कौन सी setting कहाँ पे है. But we are not authorized to make any changes. Only the reason of rights. अपने पास वो delegation service नहीं है. We are not authorized person to make any changes with our ESXi host. Is that okay? Yeah. ठीक है. So this is about the domain adding with ESXi, जिसमें हमने NTP देखा, DNS configure किया, forward lookup zone and reverse lookup zone that help us to resolve the name to IP and IP to name, and we discussed about how to access the Active Directory user to our ESXi host and provide a different permissions. अलग अलग परमिशंस के लिए हम यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के जो भी परमिशंस हमें देनी है वो हम असाइन कर सकते हैं. इज दैट करेक्ट? Yes. ठीक है. अनदर इम्पोर्टेंट यूसेज ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर. इस डोमेन का और क्या यूसेज हो सकता है? Authentication के लिए. हाँ, we already did it. Any other option? NTP authentication. What else? User permission. वर्चुअल मशीन जो भी है तो इसके मेंबर बनेंगे. डोमेन का मेंबर वर्चुअल मशीन को यस वी कैन. मीन्स अगर हम अपने VMs को भी सेम डोमेन का मेंबर बनाना चाहते हैं, सेम डोमेन में वी रखना कैन है. डू दैट. हाँ ठीक है. वर्चुअल मशीन को हम अपने ESXi पे रख देते हैं, डोमेन को फिजिकल इन्वायरमेंट में रख देते हैं, एंड वी विल क्रिएट आवर वर्चुअल मशीन टू द पार्ट ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर. कोई भी ग्रुप पॉलिसी देनी है, कोई भी सर्विस असाइन करनी है, डेलीगेशन करना है, तो वी कैन डू दैट, राइट? ठीक है. वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड, vCenter सर्वर इंस्टॉलेशन. ठीक है.
If you want to install the vCenter server in our environment, the prerequisites are, ठीक है, हार्डवेयर तो जो है वो है, हार्डवेयर में तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर vCenter सर्वर की बात करते हैं ना, तो ये एक ESXi हमें लगाना है, क्योंकि हम अप्लायंस लगाएंगे, ठीक है, अप्लायंस इंस्टॉल करेंगे। ESXi host अपने पास है ही है, we will create a one domain controller which already created, we have a domain controller with name of class.com, एक हमने डोमेन बना रखा है। with name of class.com, दैट्स इट। इसको हमें इसका मेंबर बनाना है, मैंडेटरी है। प्लस वाइल इंस्टॉलेशन ऑफ vCenter सर्वर, जब आप इस ESXi के अंदर VCSA एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, whenever we execute VCSA it will ask you where is your domain, and इस VCSA की IP एड्रेस प्लस इसका नेम, IP और एड्रेस ऑफ VCSA इंस्टॉलेशन के पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। IP एड्रेस ऑफ VCSA एंड नेम ऑफ VCSA ये पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, और इन दोनों की इंफॉर्मेशन, IP एड्रेस और नेम की इंफॉर्मेशन को आपको कहाँ पे सेव करना है, DNS के रिकेट में, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करते then we are able to install, we are unable to install the domain, we are unable to install the vCenter server, ठीक है, या डोमेन डाउन हो गया, vCenter सर्वर रन कर रहा है, आपने इंस्टॉलेशन तो कर लिया बट अनफॉर्चुनेटली डोमेन हमारा डाउन हो चुका है, that time you are unable to resolve the name and plus जो भी परमिशंस या सर्विसेज हैं आपके vCenter सर्वर की डेलीगेशन की, वो काम करना बंद कर देंगे। फाइन, Yeah. these all are the points that we need to discuss in case of vCenter server installation, जो भी हम अगली क्लास में देखेंगे vCenter server का installation। बट उसके पहले you just need to go through, हमने स्टोरेज से स्टार्टिंग की थी, चेक द स्टोरेज पार्ट, हमने नेटवर्क को कंप्लीट किया, Yeah. वी डिस्कस्ड अबाउट डोमेन एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा टास्क नहीं है इसमें। अब अगर हम बात करें कंटेंट के अकॉर्डिंग, तो वी लेफ्ट विद VMs, बट आप एक बार गो थ्रू कर लो, अगर आपको लगता है VMs में सारी चीज़ें हमारी क्लियर हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लाइक टू क्रिएट ए स्नैपशॉट, या स्नैपशॉट में एरर आ रहा है तो क्या ट्रबल शूट करेंगे, यूजर एनेबल टू ऐड एडिशनल हार्ड ड्राइव, तो उस केस में क्या प्रोसीजर यूज करेंगे, सो वी शुड नो अबाउट, Okay. तो यू कैन परफॉर्म द टास्क बाय सेल्फ, और आपको लगता है कि नहीं VM को भी ऐड करना है तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वी विल add our what we can say that vCenter server, Okay. Sure. ठीक है। देन विल कनेक्ट ऑन मंडे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जितना मटेरियल हमने इस वीक कंप्लीट किया यू विल Yeah. कंप्लीट इन वीकेंड, है ना। Yeah. Sure. चलो, थैंक यू, टेक Okay. केयर, Well, बाय। you too. Bye. Thank you.